Welcome to the lecture series on basic mathematics. I am Dr. Mohammad Mazharul Haq. Already we have started the determinant portion of algebra. So let us take, in the previous lecture already we have seen what is the meaning of determinant, what is the value and how to calculate with the help of minors and cofactors. Today we will see some properties of the determinants, and with the help of these properties we will simplify determinants with the help of some एग्जाम्पल्स लेंगे और ये प्रॉपर्टीज को समझेंगे जिससे हमको इजीली डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने में आ जाए. After calculating this we must able to understand all the properties पूरे समझ में आ जाने चाहिए, and the application of these properties, how to apply this, we must be familiar to that. So start with the properties. Determinant already we know how to calculate with the help of minors and cofactors. We'll recall in between also. In between भी हम उसको repeat करेंगे. So first property of the determinant is that if we change if rows to columns or columns to rows, the value of the determinants remains unchanged. मीन्स अगर हमने पूरे रोज को डिटरमिनेंट के चेंज कर दिया कॉलम में या पूरे कॉलम्स को रोज में चेंज कर दिया, सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी अनचेंज. सिंपल प्रॉपर्टी है. रोज को अगर हमने कॉलम में चेंज कर दिया तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा. इन द सेम वे इफ वी चेंज columns to rows, the value will not change. So this is not that much important. This is what just simple or trivial case. Let us take the second one. इफ टू रोज, अभी यहाँ पे ये सिचुएशन क्या थी, पूरे रोज को हमने पूरे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और पूरे कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर देंगे तो कोई इश्यू नहीं है, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी. बट इफ वी चेंज रोज टू रोज ऑफ ए डिटरमिनेंट, उसको चेंज कर देंगे हम. इफ वी चेंज मीन्स इंटरचेंज कर रहे हैं, यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे कॉलम में. इफ वी आर चेंजिंग, इफ टू रोज वी आर चेंजिंग, फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज ए डिटरमिनेंट. इसके लिए हमने ये अगर रो हम इसके साथ इंटरचेंज कर रहे हैं या फिर कोई कॉलम, ये कॉलम इसके साथ इंटरचेंज कर रहे हैं, इफ इंस्टेड ऑफ दिस वी आर राइटिंग दिस हियर एंड दिस हियर, और इफ वी आर राइटिंग दिस रो हियर in second row and this second row here, then the value of determinant will be same but only the sign will change. So let us verify with the help of this example. Let us change, just call this value as del. इसको पहले कैलकुलेट कर लेंगे. हाउ टू कैलकुलेट, जस्ट टेक एन एलिमेंट this and multiply this to this. 0 into 9, 6 into 8 minus 2, this 4 into 9 minus 6 into 7 plus 3, 4 into 8 minus 0 into 7. सिंपल वे, वो एलिमेंट के कॉलम के एंट्रीज और रोज के एंट्रीज छोड़ के बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. दिस को एलिमेंट क्रॉस मल्टीप्लाई by skipping these entries and these entries. So the value of this determinant is 60. If we calculate this, we are getting the value of this determinant is 60. 60 we are getting. Now what we will do is we'll interchange these rows first to second and second to first, or interchange the second to the third and third to the second. ये दोनों को interchange करेंगे. So after interchanging, we'll see whether the value is changing or not. See what we did. We did what? We have changed this row, third row to the second one, second row to the third one. इसको interchange किया. What we did? Just interchange. Now calculate again. 1 into this 8 into 6 minus 9 into 0. Likewise 2, 7 into 6 into 9 into 4. This way. Likewise plus 3 into this one. Now if we simplify further, what we are getting is we are getting the value as minus 60. So this is the important property that if we interchange, keep in mind interchange, हम interchange कर रहे हैं, एक दूसरे से change कर रहे हैं. सेकंड रो को थर्ड पे रख रहे हैं, थर्ड रो को सेकंड पे रख रहे हैं. लाइकवाइज अगर हम कॉलम भी चेंज कर रहे हैं, सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम पे, थर्ड कॉलम को सेकंड कॉलम, लाइकवाइज फर्स्ट कॉलम को सेकंड पे या फर्स्ट रो को सेकंड पे और सेकंड को फर्स्ट पे अगर इंटरचेंज कर रहे हैं, the value of the determinant will be same, only the sign will change. If positive sign is there, negative will be there. Negative is there, positive will be there.
So this is the second property. Now next one. Next property says if two rows or columns of a determinant are same, अगर same है identical है, whatever is this, कोई भी वैल्यू रहने दो, अगर सेम एंट्रीज है सेकंड कॉलम की थर्ड कॉलम के साथ या सेकंड रो की थर्ड रो के साथ फर्स्ट रो की सेकंड रो के साथ, सो द वैल्यू ऑफ टोटल डिटरमिनेंट नो नीड टू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू what write that value as 0. See here 2 3 4 2 3 4, right? 2 3 4 2 3 4 same, these two rows are same, so the value of this determinant will be 0. This property says this one. If we want to calculate by our usual way, अगर हमारे usual way से calculate करेंगे, so this will says what 2 into this one, likewise 2 into this 3 into 6 minus 4 into 5 minus 3 into this 2 into 6 into 4 into 1, likewise 4 2 into 5 minus 3 into 1. So this value, simplify further, you will get 0. So this is a very important property. Just by looking the rows or columns, if we are getting any rows or columns are repeating, अगर कोई row और column same है, directly you have to say the value of that determinant is 0. This is very important one. What again I am repeating, second property क्या थी, अगर interchange करेंगे the sign will change. First पूरे अगर rows को column में convert करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट इफ वी इंटरचेंज पोजीशन चेंज करेंगे रो की, सेकंड की जगह थर्ड पे, थर्ड की जगह सेकंड पे या फर्स्ट की जगह सेकंड पे रखेंगे, साइन चेंज होगा. एंड इफ द रोज और कॉलम्स आर सेम द वैल्यू विल बी 0, right? So this is the third property. The fourth property says that if the elements of any row or column of a determinant multiplied by सेम नंबर से, अगर पूरे रो को कोई भी, if we are multiplying that by any नॉन जीरो नंबर रहना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि अगर तुम बोलोगे जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा जीरो हो जाए, सो नॉन जीरो नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी डिटरमिनेंट रहेगा पूरी रो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन k into a1 k into b1 k into c1. So if you multiply this, so the value of this determinant is same as this number into value of the original determinant. जो original determinant है उसकी value और वो number से multiply करना है. So this is the fourth property. Simple property है, but keep in mind वो element से हमने पूरे row को multiply किया रहना चाहिए, and और कॉलम से कोई भी एक कॉलम से अगर मल्टीप्लाई किया है तो वैल्यू ऑफ दैट टोटल डिटरमिनेंट इज नथिंग बट k into the value of that determinant. Likewise, just take one example. We want to verify this fourth property, so let us multiply some number to this specific determinant. First of all calculate this determinant. ये determinant को हम हमारे usual way से calculate करेंगे. 2 into this 7 into 2 minus 1, 5 minus 5 into 3 into 2 minus 2 into 1, 8, 3 into 0 minus 7 into 2. Simplify further, we'll get this as minus 104. अब ये हमारे पास determinant का value आ गया. We got the value of this determinant minus 104. Now multiply first column. This first column multiply this by 5. 5 से multiply करेंगे. So if we multiply this by 5, what we are getting? This determinant will be this 5 into 2, likewise this one. And if we calculate this by our usual way, first column को हमने सिर्फ multiply किया, बाकी second entry same है, और same इसको अगर calculate करेंगे, this 10 into 7 into 2 minus 1 into 0, 5 into this 15 into 2 minus 10 into 1, 8, 15 into 0 minus 7 into 10. So the value of this we are getting is this minus 520, and this 520 you can write 5 into minus 104. But what is this 104? 104 minus 104 is the value of this determinant. So we has verified that this determinant is determinant में हमने क्या किए? What we did, we just multiplied a non-zero number to this column and calculated, and what we got is that number into this value, same. So this is the very important property. And the last one property is
the value of determinant is remains unchanged. Curve, see this determinant. If we multiply any number to this column and add this to the first one plus any number to this column to this one, so this will remains unchanged. ये यहाँ पे दोनों करना जरूरी नहीं है. If we take this one also, that is also remains unchanged. What this says, if to the elements of one row or column we added any constant multiple of the corresponding elements of any other row or column, कोई भी रो या कॉलम है, ये सिर्फ कॉलम के लिए जरूरी नहीं है. अगर हम रो के लिए भी अगर a1 b1 plus c1 plus 2 into a2 plus 2 into b2 plus 2 into c3 अगर करेंगे, so the value of this determinant will remains unchanged. इसके ऊपर एक एग्जांपल लेंगे. This is a determinant. First we will calculate the value of this determinant. This value of determinant we are calculating simply. We are getting the value is 4. So on multiplying, अभी हम क्या करेंगे, second column we will multiply the second column by 5 and third column by 6 and adding this to the first one. So this one like this, 5 into 2, 5 into 2, 5 into 4, likewise 6 into 4, 6 into 5, 6 into 6. So what we are getting is this, and if we are adding this, what entries are these, 35, 43, 56, and just calculate that the value of this determinant 35, 2 into 6 minus 5 into 4, 2 minus 2, 43 into 6 into 5 into 56, 4, 43 into 4, 2 into 56. Calc you can easily use with the help of calc also, or directly also. This calculation is very simple, so manually also you can multiply. So value what we are getting, the total value of the determinant is same. So this property also will help while solving the examples. Now, one special determinant is orthosymmetric. What it says, if these diagonal entries after off diagonal entries are same, this is known as orthosymmetric determinant. ये diagonal entries 1 1 2 2 3 3 छोड़ के अगर ये off diagonal entries same है, H H G G F F, so this is a orthosymmetric determinant. Likewise, इसकी अगर sign change है, if the sign is changed, so this is known as skew symmetric. And one important thing is what, these diagonal entries must be 0. ये भी याद रखने की है. तो हमने क्या देखे अभी स्टार्टिंग से, मैं वापस से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ. हमने 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखे. 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बेस एग्जांपल्स भी देखे हमने. वी हैव सीन एग्जांपल्स एंड प्रॉपर्टीज आल्सो, एंड the application of these properties, how to apply these properties. So just remember all these properties. With the help of these properties, we'll solve more examples. And if we are well familiar with these properties, the calculation of the determinant will be easy for us. Thank you.